हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिला माने वर्तमान आम एठी ओपीएस ओसीएस रो जो इंडियन पॉलिटी रो आम सीरीज स्टार्ट करथले। एटा सीरीज रो नंबर 3 क्लास रहउची, एमसीक्यू सीरीज नंबर 3 स्पेशली प्रीलिम पई रहिची। आपनकर प्रीलिम रे जो टाइप रो क्वेश्चन आसीबो ताकू बेस करी ए क्लास रहउची एवं एठी कि स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन रहिची एवं आपनको नॉर्मल एबीसीडी ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहिची एवं चैप्टर वाइज मु आपन पई नै आसी क्वेश्चन। आमे चैप्टर फिनिश करतले सीरीज 2 रे। एबे सीरीज 3 रे आमे रखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज, आपनकर डीपीएसपी क्वेश्चन आसीबो एवं किछि अमेंडमेंट ऊपर क्वेश्चन आसीबो। ठीक अछि, एग्जाम को बेस करी क्वेश्चन लेवल मध्य सेम रहिछि, किछि एमसीक्यू रहिछि, सिंपल एमसीक्यू, किछि एडवांस मध्य रहिछि। एबे हम फर्स्ट क्वेश्चन जिबा। बाकी जो माने चैनल रे नुवा अछंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु पिला माने। Which of the following fundamental duties was added? को ड्यूटीज ऐड करा गला अंडर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे। को ड्यूटी की हमें ऐड कलु 11th ड्यूटी रूपे एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज। एटी ऑप्शन देछि, चारोटी ऑप्शन आदरु कोठा हबो पिला माने ना 11th ड्यूटी थिला आगु 10, 11th हम ऐड कलु एजुकेशन ऊपर, राइट टू एजुकेशन ऊपर जो किछि नियम चेंजेस होइतला 86 अमेंडमेंट एक्ट रे। हमें कोन कलु ना इट इज द ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स बाय गार्डियंस टू गिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 year age। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? को देशर संविधान रो हम इंस्पायर हेकरी ड्यूटी की आनिलु? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस। को देश रो हम ड्यूटी की इंस्पायर हेलु ना यूएसएसआर होनेला यूएसएसआर रो हम को बरकोणी आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज करेक्ट? फंडामेंटल ड्यूटी विषय कोटा करेक्ट पचारिछि आपण कोटा करेक्ट पचारिछि ना दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। कोर्ट द्वारा एनफोर्स होइछि कि दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दे आर नॉन जस्टिसेबल, दे ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। तो एटा तो केबे ठीक होबनी, केबे राइट्स को ओवरराइड करि परिबो नाही। कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नुह कना ड्यूटी आपण करूसंती नकले मध्ये आपण को फाइन पडुनी। बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट रे जाउन एटा होछि। नॉन जस्टिसेबल माने नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑप्शन इज आपण को सी राइट आंसर। व्हिच फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्टली सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज? कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की सपोर्ट करूछि? एटी मध्ये देई देछि टू रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल को रेस्पेक्ट करिबा, सम्मान दबा काम। डीपीएसपी आर बोरोड मेनली फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? डीपीएसपी आर बोरोड मेनली फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? डीपीएस के हमें कोड बोरो करे आइले? यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा। डीपीएस के हमें कोड बोरो करे आनसे? यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा। डीपीएसपी बोरो होइछि आयरलैंड बा इरिस रु आनिचे ला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि हमर जाउछि इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोले हम कहि परछे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल? गांधीयन प्रिंसिपल को बेस करी को डीपीएसपी अछि? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री लीगल एड। गांधीयन प्रिंसिपल को बेस कर डीपीएसपी अछि पिला माने गांधी कर स्वप्न थिला ग्रामांचल रे कॉटेज इंडस्ट्री स्थापन करिबा। तो ऑप्शन इज जोटी बी राइट आंसर। आर्टिकल 43 रे मेंशन अछि कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। व्हिच डीपीएसपी नॉट एनफोर्सेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस? एनफोर्सेबल नुह किंतु गवर्नेंस पई बहुत बेनिफिट करथाय। देखो डीपीएसपी पचारिछि, डीपीएसपी पचारिछि माने 21 आर्टिकल 32 आर्टिकल गलारे फंडामेंटल राइट्स रे, बाकी बोला 36 की 37 36 जाउ डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तर बाकी बोला केते आंसर हो 37। एमते हम काटी काटी चलीबे हला। तो आंसर जो 37 डिक्लेयर करे डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, स्टिल फंडामेंटल टू गवर्नेंस। व्हिच डीपीएसपी एम्स एट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? को डीपीएसपी रो मीनिंग होउची सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आमे जुडिशियरी रु एग्जीक्यूटिव सेपरेशन करिबा बा जुडिशियरी बिकम इंडिपेंडेंट।
एटा हमको कोड जाउची ना 44 सिविल कोड गला एठी आपनकर 50 आसीबा आपनकर एठी कोन ना 50 जाउची सेपरेशन जुडिशियरी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जाउची एठी पावर ऑफ एटा किछि सिंपल क्वेश्चन चलची बाकी आपनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मध्ये आसीबो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सॉरी हम पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करि पारिबो को आर्टिकल मेंशन अछि एवं अमेंडमेंट केमिति करियो सब्जेक्ट टू बेसिस स्ट्रक्चर को बेस करिकरी आर्टिकल कोडा जीवो राइट आंसर अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन 368 आर्टिकल another 368 article parliament has given power to amend any part of the constitution subject to basic structure. Next question, which amendment is known as mini constitution कहा को मैं मिनी संविधान बोली कहिबा 24th amendment act 42nd amendment act 44th amendment act 52nd amendment act को amendment को act को हमें कहिबा मिनी constitution पहले माने मिनी constitution हमें कहिया 42nd amendment act को 42nd amendment act को हमें मिनी constitution बोली कहिबा एठी कोन कोन आड़े हिची सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रेटिव प्रिएम्बुल आड़े हिची बहुत किछि चेंजेस होइछि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कोन पाई कहंती ना संविधान रो जहा भी सब अमेंडमेंट होइछि भलो भलो फीचर्स सब 42nd अमेंडमेंट द्वारा ही होइछि व्हिच अमेंडमेंट रिस्टोर जुडिशियल रिव्यू जोटा कि कर्टेल ड्यूरिंग इमरजेंसी रिस्टोर कला अगेन इमरजेंसी समय रे कर्टेल करा जाय किंतु रिस्टोर कला जुडिशियल रिव्यू फीचर्स जुडिशियल रिव्यू फीचर को पिला माने को अमेंडमेंट एक्ट ही एठी आपन को कोटेल कला एटा आपन हे जो राइट आंसर पिला माने मन रखो 44th अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट हमें कहि परिबा रिवर्स एठी ऑथोरिटेरियन चेंजेस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एटी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसिला about fundamental duty विषय पचारिछि को स्टेटमेंट करेक्ट duties are enforceable to by the court they apply only to citizens they are but they were added by 42nd amendment act पिला मन एटा हम जानिछे 42nd amendment act द्वारा ही ऐड करा जाइछि फंडामेंटल ड्यूटी की पछरे एवं केवल सिटीजन मान को पाई होइछि काना तमे संविधान को रेस्पेक्ट करिया हमर लोक मानकर दायित्व duties of citizen only बाकी fundamental duties are enforceable by the court एटा ही भूल जो बाकी सब 2 and 3 right answer next question fundamental duty helps हमु कोन हेल्प करि थाए promoting discipline strengthening national unities directly restricting fundamental rights कोड ऑफ right answer fundamental duties helps in promoting discipline, strengthening national unities, directly restricting fundamental rights. तो fundamental duty के बारे fundamental rights की restriction करि परियो कि ना एटा हबनी तो एटा हबनी माने बाकी दीटा ऑप्शन ही हबो कारण चारटा ऑप्शन देइछि एतरे सिंगल ऑप्शन किछि नाही ऑप्शन 1 and 2 राइट हबो कारण 3 हबनी माने बाकी 1 and 2 ही हबो डिसिप्लिन प्रमोट करथाय नेशनल यूनिटी मध्य प्रमोट करथाय नेक्स्ट क्वेश्चन reference to DPSP consider following statement DPSP पर पचारिछि they aim to establish a welfare state they are enforceable by court they reflect socialistic principle DPSP रे हम जानि छै पिला माने तीनोटी प्रिंसिपल अछि सोशलिस्टिक गांधीयन लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल ये तीनोटी प्रिंसिपल अछि तो ऑप्शन 3 जो राइट आंसर DPSP रे काम कोन जा भी इंस्ट्रक्शन दउछि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को मानले गोटे परफेक्ट वेलफेयर स्टेट एवं जस्ट सोसाइटी गठन हो पारिबो तो एटा मध्य ठीक हेबो बाकी कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नु बाध्य जे आपण अप्लाई करिया को बाध्य आपण को स्टेट रे तो एटा भूल तानो 1 and 3 of right answer 1 and 3 of right answer next question which following DPSP are liberal intellectual in nature आदरु कोटा गोटे लिबरल एवं इंटेलेक्चुअल यूनिफॉर्म सिविल कोड separation of judiciary promotion of cottage industries which following DPSP are liberal intellectual in nature
लिबरल इंटेलेक्चुअल पिला माने इते जाउजे कार्टेजियनिस्ट गांधीयन नेचर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये जाउछि लिबरल प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मध्य जाउछि लिबरल प्रिंसिपल तो जो ऑप्शन 1 एंड 2 राइट आंसर 3 हबो नै माने बाकी दीटा ही बढिला नेक्स्ट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड दिस लिमिटेशन इज जुडिशियरी एवॉल्व तो कोड राइट आंसर हम जानि छी पार्लियामेंट कैन एनी पार्ट पार्लियामेंट पावर इज नॉट अनलिमिटेड हम कहि परिबा बा एठी पार्लियामेंट एनी पार्ट चेंज करि परिबो किंतु सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर एटा भूल हे जिवो बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड दिस लिमिटेशन इज जस्टिसेबल एवॉल्व बा जुडिशियली एवॉल्व ए जुडिशियरी द्वारा 1973 जो केशवचंद्र भारती केस हेतिला सेठी से केस रे कोन कहला जे पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि से ही बास पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन with respect to basic structure को आधार करी पारिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमेंडमेंट रिक्वायर ratification by states changes in federal structure change in fundamental rights change in election president हमरो जो स्पेशल हमर मेजॉरिटी अछि स्पेशल मेजॉरिटी सहित स्टेट मानक मतामत दरकार थाए को मैटर ऊपर थाए ना फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करे कहले फंडामेंटल राइट्स की चेंज करे के लिए आवश्यक पड़े नहीं इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन पाई स्टेट रो मतामत दरकार फेडरल जो अच्छी सेंटर स्टेट रिलेशन पाई मध्य दरकार तो एटा दरकार नहीं बाकी 1 and 3 FR do not always require ratification federal provisions need state ratification regarding amendment procedure some provisions can be amended by simple majorities all amendment require article 368 procedure Indian constitution is partly flexible कोड राइट आंसर हबो पिला माने आमे जानि जे किछि प्रोविजंस सम प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी माध्यम रे होई थाए किछि स्पेशल माध्यम रे भी होई थाए तानो 1 टा राइट आंसर 2 टा कोइछि ऑल अमेंडमेंट रिक्वायर प्रत्येक अमेंडमेंट हमकु कोन 368 दरकार 368 पई स्पेशल मेजॉरिटी दरकार किछि सिंपल होई परिबो तो एटा ही भूल हे जिवो पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड एटा भी राइट आंसर हो ता माने 1 and 3 ठीक 2 टा जो भूल हला 1 3 ठीक 2 है जो भूल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड लेटर ओरिजिनल लिस्ट लेटर एडेड ड्यूटीज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज प्रमोट हार्मोनी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर आगु 10th ड्यूटी थिला एबे 11th हैला 11th जो लास्ट आड हैला 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसे आड हैला एजुकेशन ऊपर द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स बा गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल बा टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रंस क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन पाई ही परिबो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आड हेतिला अदर बाकी एटा 2002 मसे रे 86 रे आड हैला व्हिच फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन लीगल रिलेवेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटी रो लीगल रिलेवेंस कोन they can be used to interpret law हला आर्टिकल 51 ए रे मेंशन अछि जे encourages rational inquiry based thinking option is your C right answer court use duties for purpose of purposive interpretations they are non justiciable but constitutionally significant fundamental duties is mostly closely related with scientific temper and rationalism which fundamental duties is the most closely related to scientific temper and rationalism
कोटा राइट आंसर एटी हिजबो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर which DPSP aims at reducing inequality in income and status reducing inequality in income and status article 40 41 38 44 reducing inequalities and status it answer is C article 38 article 38 promote करता है social and economic justice which DPSP led to enactment of maternity benefit act ए benefit act को enact कला जोटा कि आपण पई रिलैक्सेशन मध्य रहिला को आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल 40 रे मेंशन अछि डील विथ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इंक्लूड्स मैटरनिटी रिलीफ ऑप्शन ए जो आपनकर 42 राइट आंसर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोवाइड अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड का अंडर जाउछि 39 40 44 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड जाउछि आर्टिकल 44 रे मेंशन अछि सिविल मैटर ऊपर सेम नियम रहइबो हला सिविल मैटर ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी व्हिच फॉलोइंग डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जाउछि कि विलेज पंचायत इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रमोशन ऑफ काउ प्रोटेक्शन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी आदरु सोशलिस्ट प्रिंसिपल कोडा जाउछि सोशलिस्ट प्रिंसिपल जाउछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान काम पई समान दरमा नेक्स्ट आसिला व्हिच अमेंडमेंट मेड फंडामेंटल राइट्स सब ऑर्डिनेट टू डीपीएसपी लैटर रिवर्स को अमेंडमेंट एफआर को डीपीएसपी रो सब ऑर्डिनेट करिथिला किंतु लैटर चेंज हैला 24th 25th 42nd 44th it is 42nd amendment and attempt to curtail AFR later struck down by judiciary reverse होइथिला which amendment curtailed power of judicial review during emergency समय रे judicial review power को curtail करिवा को आर्टिकल मेंशन थिला 24th 39th को अमेंडमेंट एक्ट रे मेंशन अछि which amendment act curtailed the power of judicial review during emergency answer is आपन करो which amendment curtailed the power of judicial review during emergency answer is your 42nd amendment act which amendment restore civil liberties and democratic balance civil liberties and democratic balance 42nd 44th 52nd 61st एठी आंसर इज 44th रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटी पर पचारिछ they were recommended Soron Singh committee they were enforceable through article 32 they apply only citizens ला माने फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नो एटा कटिला बाकी ओनली सिटीजन में जानि आगु टिके आगु पडिचे दे वेयर रेकमेंडेड बाय सोरन सिंह कमिटी द्वारा रेकमेंडेशन हेइथिला कि हैला तो ऑप्शन है जो हां एटा हेइथिला एबो एटा ठीक एटा तो भूल हबो एनफोर्सेबल नो तो 1 and 3 राइट आंसर हबो fundamental duties contribute national integrations responsible citizenship limitation fundamental rights कोड ऑफ राइट आंसर पिला माने फंडामेंटल लिमिटेशंस अछि कि फंडामेंटल ड्यूटी केबे राइट्स ऊपर लिमिटेशन करिवो कि एटा भूल दिनस ना से कोई लिमिटेशन फंडामेंटल राइट्स एटा भूल नेशनल इंटीग्रेशन हबो एटा हबो 1 and 2 राइट आंसर हबो regarding DPSP pacharichi they aims to socio-economic democracy they are enforceable by court DPSP not enforceable they guide state policy making
आर अर्थ हूँ जो स्टेट निजर पॉलिसी बनाउछंती आ प्रिंसिपल को मानिया दरकार तो हम आपन को राइट आंसर एटा हे जिवो एटा मध्ये हे जिवो ऑप्शन हे जो 1 and 3 राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फॉलोइंग डीपीएसपी आर गांधीयन नेचर विलेज पंचायत प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड दिवार इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल बाकी रहिला विलेज पंचायत बनिबा ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करिबा ऑप्शन 1 and 2 राइट आंसर हैला ऑप्शन 1 and 2 हो बाकी सब कटि जिवो नेक्स्ट डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस डीपीएसपी ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स कोर्ट अटेम्प्ट हार्मोनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी कोड आबो करेक्ट आंसर डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस से जानिचे गवर्नेंस पई डीपीएसपी दरकार कान केबे भी डीपीएसपी एफआर को ओवरराइड करि परिबो नाही कोर्ट अटेम्प्ट गुड हार्मोनी मेंटेन करथे एफआर एवं डीपीएसपी मध्य रे एटा ठीक बाकी जो 1 and 3 ठीक अमेंडमेंट विषय पचारिस पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन पिला माने हम जानिचे बेसिक स्ट्रक्चर संविधान रे मेंशन होई नाही संविधान रे बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन होई नाही एटा आपन को भूल हे जिवो बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड करि पारिबानी एटा ठीक पार्लियामेंट कैन अमेंड पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स आल्सो बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर तो 1 and 2 राइट आंसर हो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट करि परिबा नाही Which amendment require state ratification? Kuda dakar. Change in distribution of legislative power, change in fundamental duties, change in election president. Kuta state ratification dakar. State ratification पाई हमको दरकार इलेक्शन वगैरह पाई एवं ता सहित आमे लेजिस्लेटिव पावर पाई फंडामेंटल ड्यूटी पाई चेंज किछि स्टेट रो मतामत आवश्यक नाही Which constitution is considered flexible? Which Indian constitution flexible कौन पाई हमें कहिया रीजन कौन Some provisions can be amended by simple majority. All provisions need state ratification. Article 368 allows varied procedure. पिला माने हमें जानि छथि किछि some provisions simple majority होई थाए ओके हमें जानि छे किछि स्पेशल भी होई थाए तापरे all provisions need state ratification नहीं all हबनी some दरकार तो बाकी बोलला कोन 1 and 3 राइट आंसर हबो तो 2 टा भूल हे जिवो एटा all हबनी some हबो इतला पिला माने फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट एंड फंडामेंटल सॉरी डीपीएस विषय क्वेश्चन आनलिए नेक्स्ट आपन को आउ दिटा विषय क्वेश्चन नै आसीबी पार्ट भी माने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर क्वेश्चन आनिया नेक्स्ट क्लास रे जो माने चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा नेक्स्ट अपडेट आपण मान पाखरे बहुत जल्दी पहुंची पारिबो थैंक यू।